Hello everyone, welcome to LUKMAAN IAS. Today we are going to have the Hindu analysis of 19th September 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper. So these are the important developments. Mains purpose के लिए ये काफ़ी important है और prelims purpose के लिए ये important है. So let us see one by one. First for mains related articles on page number 6, editorial page. The context of the article is recently passed bills in the agricultural reforms by the government in the parliament, and the farmers are agitating against them, especially those from Punjab, Haryana, or let's say Rajasthan also. So yes, let us try to understand what are the concerns of this let's say political parties also, and some let's say farmers also regarding this. So yeah, here recently the union minister with let's say who belongs to Akali Dal party from the Punjab, which was let's say having the alliance with the NDA government at present, had resigned in protest of these bills, passing of these bills. Okay, so what are the concerns here from the farmers or some states? There is a strong pushback from the farmers against these three bills that seeks to replace the ordinances that were issued in June on the key aspects of farm economy. कौन से थे वो? Trade in agricultural commodities, price assurance, farm services including the contracts, and stock limits of essential commodities. So these acts like Essential Commodities Amendment Act or let's say Contract Farming Act or Land Leasing Acts, so ये सारे जो तीन bills थे वो pass हुए हैं, and because of let's say there is farmers are agitating against these bills. The opposition to the bills, particularly on trade, flows from the position articulated by Punjab that agriculture and markets are state subjects. So this is the important argument here, that central government has no role to play in let's say agriculture or related marketing mechanism of food grains. So states are independent in this regard, and there should be no tinkering with the MSP or APMCs that form the backbone of existing trading arrangements. So this is the first argument that we have to. Though several states have already liberalized agriculture marketing, amending their APMC acts, provisions in Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill providing the unfettered commerce in designated trade areas outside the APMC jurisdiction without levy of any fee, more generally empowering the center to issue order to states in these laws. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. आउटसाइड द एपीएमसी एरियाज द फार्मर्स आर अलाउड टू सेल, एंड लेट्स से अनफेटर्ड कॉमर्स, यानी कि पहले तो क्या होता था कि सारे जो फार्मर्स है वो एपीएमसी में ही सेल कर सकते थे देयर प्रोड्यूस. नाउ दे हैव बीन गिवन द ऑप्शन. हम देखते हैं कि ई नाम जो रिफॉर्म लाया था उसमें भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि आप आउटसाइड एपीएमसीज दे कैन आल्सो सेल देयर प्रोड्यूस. So here basically APMCs has jurisdiction and they levy fees. So outside APMCs without levying any fee, that's why the state governments or states are opposing that. A challenge has been mounted by the Rajasthan in addition to this, declaring central warehouses as procurement center under APMCs Act and therefore required to pay market fee to the state. So this is again one of the new challenge. We can say that in addition to that. So recently PM has let's say said that these arguments are misleading and promising that MSP system will continue and it is here to stay. ऐसे minister ने भी कहा है. So we can say that this can elevate the concerns of the farmers. However, the government should come up with more and more let's say have the effective communication with the states and the farmers, and tell that these bills or acts are in long term benefit to the farmers. अभी शॉर्ट टर्म नहीं होंगे बट लॉन्ग टर्म के लिए दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स. Thereby there will not be any increase in we can say that prices of food grains. ये actually problem हो रहा था. Essential Commodities Act especially, which had some stock limits
ठीक है, तो वो स्टॉक लिमिट्स अभी निकाल के हम बोल सकते हैं कि मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन्स, बिल्डिंग एंड ऑल. सो वे फॉरवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है. वी नो दैट द हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर एडिटोरियल होते हैं थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड होते हैं, हम बोलते हैं. हाउएवर हियर ऑल्सो इट इज हैविंग सम आर्ग्यूमेंट्स दैट इंस्टेड ऑफ दीज रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने कुछ और तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए था. तो ये भी पॉइंट हम बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आंसर में. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज सेइंग दैट एज अ वे फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लेट्स से ब्रिंगिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देर इज एविडेंस दैट मेयर लिबरलाइजेशन डज नॉट लीड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स, न्यू मार्केट्स. व्हेन बिहार रिमूव्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, व्हेन बिहार रिमूव्ड द APMC सिस्टम and markets suffered loss of fee revenue with no significant private investment in the sector. So ये एक example दिया जा रहा है. If centers intend to strengthen the competition, it should massively fund the expansion of APMC market system, removing the trade cartels. This is the main problem here. Providing farmers good roads, logistics, scale and real-time information. We can say that this is also important. That infrastructure in APMCs is problem. Farmers are not having enough infrastructure or accessibility to these APMCs, जो roads and all. ये trade cartels जो problem होता है APMCs में वो हटाना चाहिए. Political influence जो होता है वो कम करना चाहिए. These fronts the government should work. Rather than opt for heavy centralization, the emphasis should be on empowering farmers through state farmers commissions recommendations by the National Commission on Farmers. ठीक है, तो excuse me. Yes, so rather than opt for heavy centralization, the emphasis should be on empowering farmers through state farmers commissions recommended by NCF to bring about speedy government response to the issues. In conclusion, we can say that without strong institutional arrangement, laissez-faire policy may harm lakhs of unorganized small farmers. तो strong institutional support arrangement होना चाहिए free market economy के लिए. Otherwise there will be let's say problem of let's say जो बड़े farmers होते हैं they will only benefit. Small unorganized farmers होते हैं they will be always in loss. हम देखते हैं कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट फिलोसॉफी होती है, laissez-faire होता है. So there we know that those which are having let's say or hold on the factors of production, they only benefit. Otherwise the remaining there will be let's say lack of profit. So we can say that this as a part of conclusion we can mention, and similar way we can have question. Without strong institutional arrangement, laissez-faire policy may harm lakhs of unorganized farmers. Discuss in the light of concerns raised by recent bills passed by the government in agriculture reforms. So you can mention all these points in the answer. Fine. Yes. Moving on to next article. Recently the Supreme Court has given a verdict in the case which let's say hearing a plea for pre-telecast ban on program partially aired by Sudarshan TV on UPSC Jihad. So basically this TV was Sudarshan TV episode, or let's say UPSC Jihad. That episode was specifically targeting one particular community, and this was against let's say dignity or human dignity, as the Supreme Court is saying here. So देखते हैं क्या बोला है Supreme Court ने. Important, the message needs to go out to the media that it cannot make religious minority the target of its attacks. ठीक है, the dignity of community is as important as journalistic freedom. तो दोनों को उन्होंने बैलेंस करके कहा है कि we cannot let's say compromise dignity of community in the name of journalistic freedom. ठीक है, तो काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट वहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला है. said the court did not have problem with the Sudarshan TV exercising their journalistic privilege. Rather, the channel had no business to make sweeping comment about the entire Muslim community.
इट क्रॉस द रूबिकॉन, यानी कि ये जो टीवी चैनल है, इट क्रॉस द रूबिकॉन व्हेन इट इम्प्लाइड दैट सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी हैड टेरर लिंक्स। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अनफाउंडेड कमेंट्स या फिर एलिगेशंस किए गए टुवर्ड्स पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी। Not every child can afford to enroll for elite UPSC coaching classes. They may be helped by the organizations to enter the civil services. So that is fine, we can say that. Though calling at the media regulatory bodies as such as NBA, News Broadcasting Association, toothless, the court asked them and the government to suggest the measures to strengthen the self-regulation, media self-regulation. ऐसा भी उन्होंने कहा है कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए और ये रेगुलेटर्स लाइक एनबीए दे शुड वर्क इन दिस रिगार्ड। सो उन्होंने ये कहा है कि अगर ये सेल्फ रेगुलेशन होता तो हम खुद से ये प्री टेलीकास्ट बैन नहीं करते, ठीक है, वो पहले से ही कुछ मतलब बैन कर देते रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दे हैव इंटरवीन्ड इन सच लेट्स से प्ली। आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। यू कैन यूज सच काइंड ऑफ रेफरेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइड, वी कैन से वर्डिक्ट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लेट्स से डिग्निटी ऑफ कम्युनिटी और जर्नलिस्टिक फ्रीडम, तो उनको बैलेंस करने के लिए। फाइन, सो यस, नेक्स्ट अगेन वेरी गुड स्टेप बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, it has intervened to bridge the digital divide. It is said that it directed both private and government school in the capital to provide gadgets and internet package दोनों to free of cost to the poor student. तो आरटी के द्वारा जो 25% कोटा के थ्रू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो एंटर होते हैं प्राइवेट स्कूल में, सो फॉर दोज स्टूडेंट्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड द गवर्नमेंट बोथ to freely distribute these gadgets and have the internet package free of cost, because it is acting as obstruction to access to the education जो fundamental right है, हमने बोला था RTE में। so उन्होंने बोला है कि ये RTE की ये sections जो है 3, 8 और 12 of the RTE, so ये जब provide नहीं करते हैं तो this is acting as we can say that इंट्रा क्लास डिस्क्रिमिनेशन। एक ही क्लास में ये जो 75% फी पेइंग होते हैं और 25% EWS स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेस द एजुकेशन। जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल में, वो इनको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या फिर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, सो दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आरटीआई आर्टिकल 14, 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 21 में तो हमने देखा है आर्टिकल 21A, इट इज टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन, सो इट इज वायलेटिव ऑफ दैट राइट, ऐसा उन्होंने बोला है। So bench said that private unaided school will be entitled to claim the reimbursement of reasonable cost of procurement of these gadgets and internet package under section 12 of RTE Act. The court also ordered the formation of 3-member committee and immediately let's say work on this in this regard. ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए बोला है। Fine. So we can say that whenever we talk about bridging this digital divide, this is one of the important verdict now by the Delhi Supreme Court, Delhi High Court, sorry. Fine. Yes. Some important developments regarding prelims related some information we can know that Vaibhav Vaishvik Bharatiya Vaigyanik Summit. Now this summit, virtual summit, is going to take place by the let's say being organized by DOS, Department of Science and Technology, and DRDO. Okay, so these are collaborating with each other for let's say this session or summit, and this will be organized as a month-long session of webinars and online discussions involving NRI scientists. Basically, what is the let's say objective here? To develop the comprehensive roadmap to leverage the expertise and knowledge of global Indian researchers for solving emerging challenges in India by bringing Indian overseas and resident academicians and scientists together. A structure of association will be evolved from here onwards.
The key areas of discussions will be quantum technology, artificial intelligence, machine learning, and let's say semiconductor technology, communication technology, photonics, and computational and data sciences and aerospace technologies, among the others. Basically, it is talking about the emerging disruptive technologies. तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा यहाँ पे. सो वैभव समिट, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, एंड हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, एनआरआई साइंटिस्ट. फाइन. सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में. इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय yes, Department of Science and Technology and DRDO. This is the correct statement. But second statement, collaboration with NRI students, तो ये गलत स्टेटमेंट है. NRI स्टूडेंट्स नहीं तो NRI साइंटिस्ट एंड academicians. They are collaborating in research and development activities. Fine. So that's why we can say that only one answer is correct. Fine. Moving on to next article. The article is saying that bamboo shoots can be among the cheapest immunity booster. Some important information for prelims perspective also. And COVID-19 related आपको way forward में बताना चाहिए. The tallest grass on the earth, bamboo जो होता है, it is a variety of grass. Bamboo considered as grass of life in the, let's say, northeastern region. It could be, let's say, cheapest immunity booster according to some researchers and experts. So nutraceutical bamboo shoots. Nutraceutical यानी कि क्या होता है, describe to medically और we can say nutritionally functional foods, जिसको nutraceutical बोला गया है. Bamboo shoots are edible sprouts of perennial grass. ठीक है. So protein content इतना होता है उसमें, and they also contain 17 amino acids, 8 of which are essential to human body. The shoot production and consumption confined mostly to northeastern states in India. ठीक है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ज़्यादा ये कंज्यूम किया जाता है और उन्हीं को पता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है. So value addition to these let's say bamboo shoots, the storage and diversification in the new age food products can enhance its value. तो इसलिए ये होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं. और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, लाइक फिलीपाइंस, देर इज लेट्स से improvements in this regard to tackle the COVID-19, boost as immunity. At the same time, bamboo has been a key ingredient in the new antimicrobial soaps and hand mists developed by Filipino scientists to fight the novel coronavirus. ओके. सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ पता होनी चाहिए. प्रोडक्शन कितना होता है बाम्बू का. अकॉर्डिंग टू नेशनल बाम्बू मिशन, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर द बाम्बू and is the second richest country after China in terms of bamboo diversity with this much species, 136 species of bamboo or varieties of bamboo. Fine. So yes, this is the basic information. और आप ये way forward में ये भी ऐड कर सकते हो कि कैसे bamboo shoots they can be used to boost immunity here naturally. Fine. Captions and quotations from today's newspaper. जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमने देखा, यहाँ पर बात की है, लेट्स से टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर माइनॉरिटी, बैलेंसिंग द डिग्निटी ऑफ कम्युनिटी, एट द सेम टाइम बैलेंसिंग ऑन अदर हैंड वी कैन टॉक अबाउट द जर्नलिस्टिक फ्रीडम. तो ये आप मेंशन कर सकते हो स्टेटमेंट. और यहाँ पे आपने पहला जो एग्रो इकोनॉमी से रिलेटेड GS3 में अगर क्वेश्चन आता है या ऐसे आता है तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो स्टेटमेंट. फाइन. सो दीज वेर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of mains related articles is done by Ansari Sir and team, you can contact LUKMAAN IAS. Thank you.